Ladakh would have nature tourism, then we have spiritual tourism, we have adventure tourism, we have winter tourism, and one more important component, as far as I feel, is that wildlife tourism is another area which has so far been not considered. वाइल्ड लाइफ इनफैक्ट जो है ऑलमोस्ट हर गाँव में दिखने को मिलता है यहाँ पे। मैं तो यही कहूँगा लद्दाख पूरा जो है एक वाइल्ड लाइफ एरिया है। और यहाँ क्योंकि जो है हमारे लोग जो है वाइल्ड लाइफ के साथ जो है हमारा करीबी रिश्ता रहा है। तो यहाँ हम एक्चुअली शिकार नहीं करते हैं, हंटिंग नहीं करते हैं, वी लिव टुगेदर, हम साथ में को एग्जिस्ट करते हैं। I'm grown up in this valley, and my childhood friends are snow leopard, mammoth, wolf, eagle. That is not only me, that is the whole Ladakh. That is how, since many centuries on this earth, in this place where 4,200 meter high, we had such a experience how humans and wildlife and animals, we live together, we share together, we take and give. That is the one of the biggest to see the world example from Ladakh. हमारा इस ट्रांस हिमालयन जो रीजन में जो है सबसे जो यूनिक और जो स्पेशल जो हमारा यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ्स होते हैं, जैसे कि हमारे स्नो लियोपर्ड हो गया, यहाँ पे लिंक्स हो गया, उस तरह के जो पैलेस कैट हो गया, फिर एंटीलोप हो गया, इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे ममल्स यहाँ पे पाया जाता है। और हमारे ब्लैक नेक क्रेन हो गया, वो बड़ा एक यूनिक होता है। तो इस प्रकार से बहुत ही जो है अद्भुत किस्म के यहाँ पे वाइल्ड लाइफ पाया जाता है। Ladakh is not only a beautiful place in India, but you see in the gigantic, beautiful mountain, beautiful rocks. Ladakh is more than that. When you talk about what we have to see in Ladakh, is yes, definitely the four seasons, summer, winter, and then spring, and then beautiful autumn. And now we are in the wintry start, And in this gigantic cold desert, Ladakh has to see many things, That is something beyond our imagines. What is that, That is the wildlife in Ladakh. It's unbelievable wildlife we have here. But now you might see, in this cold desert, what you can to see, You see this behind mountain, It has like camouflage so many wildlife, which is incredible to watch it. The reason that Ladakh has a high diversity of these flora and fauna is because it is at the boundary between the Palearctic biogeographical realm and the Oriental biogeographical realms, and because of that there's a greater diversity, and also forms a transition zone between the vast Tibetan plateau in the east and the rugged Hindu Kush Himalayan mountains in the west. लद्दाख में 2 सेंचुरीज और एक नेशनल पार्क है। एक चांगथांग हाई एल्टीट्यूड सेंचुरी है, एक काराकोरम सेंचुरी है, और यहाँ हेमिस नेशनल पार्क है। इन तीनों में काफ़ी संख्या में वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। यदि आप वाइल्ड लाइफ एक्ट देखें तो उसके शेड्यूल्स में जब आप जाते हैं तो आप जब मैमल्स की संख्या देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 15 to 16% ऑफ मैमल्स, Schedule 1 mammals in the Wildlife Act, they are found in Ladakh. So it is very rich in mammals. The bird species are also found in abundance. This lies in the path of Asian flyway. और यहाँ पर हमारे पास wetlands भी काफ़ी ज़्यादा हैं. Incidentally, Ladakh is one of those places where you will find highest density of high altitude lakes. Few places like Sokar and Somoriri come under the Ramsar, wetland रिजर्व। जहाँ तक करगिल का ताल्लुक है, यहाँ पे जो है ना वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स का है, यहाँ पे ब्राउन बियर का साइटिंग होता है। We have a rich diversity in terms of both flora and fauna. We have the charismatic snow leopard, Himalayan wolf, ungulates like ibex, Ladakh ural, blue sheep, and the Himalayan brown bear, which is found only in this part of Ladakh region. The department has also reported recently
the jackal and lynx for the first time from Kargil district. And also we have recently videographed musk deer from this area. We have been promoting Himalayan brown bear expeditions in Kargil for the last 4 years, and which is also a part of our project around human wildlife conflict mitigation. The economy of Ladakh, as per an approximate estimation, contributes to the GDP of Ladakh to the extent of more than 60%. कि लद्दाख में टूरिज्म एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है, बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और सब्सटेंशियल पार्ट फॉर्म करता है यहाँ की इकोनॉमी का. What we do is we run highly high-end wildlife tourism all across Western Himalayas. We have a philosophy. Our entire business model runs on 3 C's, which we call community, conservation, and commerce. मैं काफ़ी साल से उले एक जगह है, छोटी सी गांव है जहाँ सिर्फ 6-7 घर है, फैमिलीज है, वो बैठते. तो वहाँ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है. तो उनको कॉन्फिडेंस में लिया. उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है. तो हम क्या करते, उनके जगह हम किराए में लेते हैं जी, मतलब कुछ. फिर उसके बाद वी इन्वॉल्व ईच एंड एवरी फैमिली जो है, उनमें से 1 या 2 आदमी आए हमारे साथ काम करें. I run a travel company, so I specialize in wildlife tourism, especially the snow leopard, birding tours, and other mammal species like Pallas's kid called Manul and Eurasian lynx. When it comes to promoting tourism or promoting wildlife tourism rather particularly, there are a few particular locations which people highlight, right? But if you actually see the overall terrain, there are possibilities of coming across mammals and other like endemic species, I mean birds or be it mammal, in many other places also. So if we can come across other spots also which we can promote, apart from the ones which are already being like known to people, then I think it will be easier for us to like help in the economy of the people as well, build the local economy as well. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जिनको जो है इस वाइल्ड लाइफ टूरिज़म के द्वारा जो है यहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है. तो जैसे कि अभी हमारे यहाँ शंग में है, अभी बहुत अच्छा एक सेटिंग का एक वहाँ जगह बना हुआ है. वहाँ पे इवन जो है वहाँ पर जो क्लाइंट्स है वो जो गेस्ट है वो वहाँ पे रहने के लिए भी जो है उनको भी जो है वहाँ पे एक अच्छा सुविधा का वहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है. उसी तरह हमारे रुम्बक में भी होते हैं, हमारे उल्ले साइड में होते हैं, हमारे हिमिश चुप्पाचंद साइड में. अब जब वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, ये लोकल इकोनॉमी में भी मदद करता है, बिकॉज हम गांव में जाते हैं. ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ गाँव में ही मिलता है, गांव और दूर दराज एरिया में. जब इट हेल्प्स देम, जब लोग वहीं रहना पसंद करते हैं अपनी जगह पे, जब उनको दिखता है कि कुछ बेनिफिट मिल रहा है, कुछ फ़ायदा मिल रहा है उनको. एक तो उनका हम जो घर है एज ए होम स्टे और एज ए हाई एंड लॉज हम हायर करते हैं. सेकेंडली वी इन्वॉल्व देम एज स्पॉटर्स, एज गाइड्स, एज पोर्टर्स. सो वो देखते हैं कुछ आ रहा है वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में, तो ले में क्यों जाए, बाहर क्यों जाए, गांव से बाहर. फिर उनका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है कुछ हम खरीदते हैं. और सबसे अच्छी बात यह है कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में सबसे लंबे समय के लिए रहते हैं. For both local communities and tourists to understand the value of wild animals, not just the economic value, but also the ecological value. That is very important. These animals are not just there. They are doing some very important work to keep the system working. So the ecosystem services that these animals provide. जब हम उनको एजुकेट करते हैं, लद्दाख में ये भी है वो भी है, तो वो बार आते हैं. अभी 2000 फिर मुझे 2018 में भी मैं गया विंटर में स्नो लेपर्ड के लिए, और वहाँ पे भी हमें उस समय काफ़ी अच्छा अनुभव रहा विंटर का. फिर आपके 2020 में फिर मुझे दोबारा जाने का मौका मिला और हम करीब 15-20 दिन वहाँ रहे.
और काफ़ी इलाका हमने कवर किया उस समय। जो वाइल्डनेस थी पहले 100 150 किलोमीटर कोई नहीं मिलता था, अब वो ख़त्म हो गई है। रोड्स काफ़ी बन गई हैं, लोगों का आना जाना, टूरिस्ट का, जैसे लास्ट ईयर मैंने देखा इतना ज़्यादा कंजेशन था, इतना टूरिस्ट था, लेह में तो चलने की जगह नहीं थी। Well, I think at the government level, it's there are two things which I feel which are very critical that the government, which the private sector stakeholders, I think maybe expect from them, is to one is to create policies and regulations which are responsible, in nature, where we don't exploit our ecosystem so much. What we need to do now is that really explore all of these different niches. One is of course the snow leopard tourism, and bear tourism, brown bear tourism is slowly growing, and we really need to put in place rules and regulations at this particular stage. Otherwise it becomes very difficult later to develop all of those, once things start taking it a very large scale, it becomes really difficult to work on the rules and regulations, and which is very important. मैं सभी टूरिस्ट से भी यही अपील करना चाहता हूँ, सभी लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ, लद्दाख का हर क्षेत्र जो है देखने की आवश्यकता है। एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे फोकस ना रख के जो है हर एक रूरल सेक्टर में जाने का आपका कोशिश होना चाहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटीज़ भी है वहाँ पे, वाइल्ड लाइफ भी अच्छा मिलता है, वहाँ के फ्लोरा फोना बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार का मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। Tourism Department, in collaboration with our Wildlife Department, would like to initiate at least few routes in Ladakh, wildlife tourism routes, which would be, a 12 months tourism, because winter has its own unique features and summer has its own unique features. The bird tourism, it's really appreciable that the wildlife department and the UT administration recently organized the bird festival in Ladakh, and that's a very positive step. Actually, we should be organizing these kind of festivals more and more, so that at least people become aware of all the animals that we have, especially birds, what kind of threats they are facing, not just for the tourists but also for the local communities. It's important to organize these kind of festivals, so I think that these are actions in the right direction. अब इसी में यदि हम वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जोड़ दें तो इससे हमारे को बहुत फ़ायदे होने की उम्मीद है। एक तो लोकल लोगों को रेवेन्यू होगा और उसके डाउनस्ट्रीम बेनिफिट्स जो हैं वो सभी को मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टर्स, कैटरिंग इंडस्ट्री, इन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। प्लस इससे एक अवेयरनेस भी क्रिएट होगी फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। We have been thinking about it now for the last few months, and hopefully this year winter or next year onwards we are very keen to start with at least few routes, identified routes, regulated routes, where the sighting of animals would be frequent and more likely, and a lot of bird sanctuaries where migratory birds come in summer. These areas we are trying to explore. अभी हम जो है एक उन जगहों को प्रमोट करने का हमारा एक कोशिश अभी हो रहा है। बहुत सारे टूरिज्म के नए कैलेंडर्स हम बन रहे हैं अलग अलग। And when whoever wanted to come to see the wildlife and be a eco tourist in Ladakh, you have to be very sensible. You have to be very fit. You have to love the animals from your heart. इस साल हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग नून कून की बेस में जाके जो ना हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग, टूरिज्म के स्टेक होल्डर के लोग और डिग्री कॉलेज में टूरिज्म डिपार्टमेंट के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो टूरिज्म रिलेटेड स्टडी करते हैं, उनको लेके हम नून कून के बेस में जाके उनको वाकई में जो है इन रियलिटी में माउंटेन और उनके फ्रेजिल इकोसिस्टम के बारे में हम उनको बताएंगे। The irony is, let's say the maximum amount of foreign tourist arrival in India is from November until April. And a place like Ladakh, which has such a huge potential in terms of promoting Ladakh as a winter wildlife destination, sends a message across saying like
we are closed for business from November until April. What I would highly recommend is we really need to open ourselves to the idea that the winter is just a mind game, and develop infrastructure not just in Leh but all across Ladakh, especially where the hotspot areas are. Engaged local community and go with a sense where you can promote sustainable tourism. And then Wildlife Board of Ladakh, who normally kind of decides or they deliberate upon what type of tourism, what type of movements should be promoted, especially to do with wildlife. So they should also coming up with policies to regulate wildlife tourism. In many of the major tourism documents, we have been completely witnessing that the wildlife is completely missing from the whole picture. When it comes to many of these tourism discourses, wildlife and wild animals don't feature much in these tourism documents, and it's high time that we started thinking about that, and then started thinking about wild animals. The administration will do so with the help and help of suggestions of all the stakeholders, those who are working in the wildlife since many years, like organizations like Snow Leopard Conservancy, the GB Pan National Institute. We can also contribute. I represent Ladakh Birds Club, and then there is a NCF or Snow Leopard Trust, a branch here in Ladakh. The Snow Leopard Conservancy India Trust has been involved in the wildlife tourism for quite some time now, especially related to the rural tourism, the homestays and the eco cafes and all of that that were started many years ago. So I would really recommend that the UT administration take initiatives and first of all documenting all these species, whatever we have, all the different taxa, be it mammals, birds, butterflies, and brown bears. And in this area, we would also need certain technical inputs from various stakeholders. And GB Pan National Institute of Himalayan, this environment will be a very important institute who can guide us in this area. In terms of scope, I see a huge scope, if just, it's given a proper marketing strategy is devised and it's been marketed Ladakh winters as a proper wildlife tourism destination. अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इको टूरिज्म पॉलिसी इन वाइल्ड लाइफ एरियाज को पास किया है. इसके काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं. इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर इको टूरिज्म डेवलप की जाएगी और उन जो भी रेवेन्यू होगा उनके साथ इनकम शेयरिंग का एक प्रोविज़न होगा, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी और जितने भी नॉन टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं वो इको टूरिज्म के लिए हम उसको वाइल्ड लाइफ एरियाज में लगा सकते हैं. इस बार हमने बहुत सारे नंबर्स में हम होम स्टे हमने दिया है, अभी भी चल रहा है इसका प्रोसेस. हमने इस बार काउंसिल के सब्सिडी में भी हमने बजट में भी जो है हमने प्रोविज़न रखा है और यूटी के स्तर पे भी जो है इस बार हमारा स्पेशल बजट का एलोकेशन हुआ है, जिसमें जो है हम जो है रूरल टूरिज्म को स्ट्रेंथन करने का हमारा कोशिश यही रहेगा. पिछले 2 सालों से हमने हिल काउंसिल करगिल के कैपेक्स बजट में भी उनको काफ़ी पैसे फंडिंग प्रोवाइड किया है, जिसमें जो है जहाँ पे ये ब्राउन बेयर और ये स्नो लेपर्ड्स वगैरह साइट होता है वहाँ पे जो है ना हमने उनको उस गांव में जो है ना हमने होम स्टे एस्टेब्लिश करने का सोचा है. वहाँ पे हमने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करने का सोचा है और वहाँ पे बाकी चीज़ें फैसिलिटेट करने का हमने सोचा है. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वाइल्ड लाइफ इस हमारे कल्चरल का एक अहम और एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है और चाहे वो हमारे हिस्ट्री में जो है हमारा जो कल्चरल में जो है इनका जो है एक पार्ट रहा हो, या साथ ही साथ जो है ये आजकल जो है टूरिज़्म में जो है किस प्रकार से एक लोगों को एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने में जो है लोकल्स लोगों को बेनिफिट मिलता है. हम अभी यही चाहते हैं कि मैक्सिमम जो है हमारे जो है
लोगों को टूरिज़्म के द्वारा बेनिफिट मिले, इसलिए जो है हम अभी हर गांव हम प्रमोट करने का हमारा कोशिश है। होम स्टेज हम जो है इस बार हर जगह पे दे रहा है, ताकि जो है कोई भी टूरिस्ट कहीं पे भी जाके वहाँ रहे और वहाँ पे कोई भी जो है साइटिंग कर पाए। अभी हमारा एक प्रयास ये रहेगा, आने वाले दिनों में हम गांव के लोगों को हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं कि उनके वहाँ जो वाइल्ड लाइफ साइट करते हैं तो उनके बारे में वो टूरिस्ट को बता पाए। This is how, when all the young generations wanted to becoming a wildlife photographer, wildlife filmmakers, and wildlife tourist, and there is really a big scope. But for that, you have to be physically fit, mentally fit, and then you have to laugh, and you have to be very eco-friendly and very environmentally have to be deep study on that. Then you will be becoming one of the finest wildlife tourist guide, wildlife photographer, wildlife filmmaker. That's what I believe in the young generation. I always say, Ladakh calls you back.